Good evening. So yesterday I was just trying to help you understand that why we need a constitution. So we have looked at the idea of the constitution first. So what is constitution? What does it mean? And then in brief, we also tried to look at a very popular method of classifying the constitutions around the world. And after that, we have to look at the utility of the constitution also. That why do we actually need something called a constitution? And if we would need a constitution, then what are the purpose that we wish to attain by framing a constitution, by actually having a constitution in the very first place? And for that, these are the two essential components that one has to understand. The two essential concepts that we should understand. The first concept is the concept of constitutionalism. Okay, I should again tell you that constitutionalism in layman terms is a concept which talks about limitations of the powers of the state. Okay, so we are saying that we will never allow the state to have unassailable power. We will never allow the state to have a power which is in the realm of an unlimited power, which means whatever may be the nature of state power. So some state power may be law making power, some state power may be the law implementing power, some state power may be law interpretation power, whatever it is, administrative, legal, admin or law making, law implementing, whatever it is. All powers need to be defined by the constitution and their boundaries should be set in. We should have a demarcated boundaries of all these different types of powers. That is why what emerges out of this discussion is the concept of constitutionalism, that is संविधानवाद. ठीक, तो संविधान हो सकता है हो, लेकिन अगर उसमें संविधानवाद नहीं है तो प्रजातंत्र नहीं हो सकता वहां. तो चाइना का मैंने एग्जांपल आपको दिया, क्यों दिया? ताकि आपके मन में ये एग्जांपल आपको ये समझ में आना चाहिए दैट idea of constitutionalism, then why do we need to have a constitution? Because we want constitutionalism to be implemented. But it's not given that there will be constitutionalism if you have a constitution. There can be constitution which could be devoid of constitutionalism as well. That is why you need to have institutions in place. The more the institutions you have, the better structurally organized the institutions you have, you will have more protection of people's rights and people's liberties. Because ultimately, why do we need to limit the powers of the state? Because any unlimited power can lead to a tyrannical nature of the misuse of state power. So if the state becomes tyrannical, who is the sufferer? We are the sufferer. So what is the ultimate objective? That we have to protect, we have to prevent every individual from such excesses of the state. That is why state has limitation. Because if state knows that it has no limitation, then state could do anything. I'll give you one example to substantiate my point. In our fundamental right, there is a provision which says that under Article 20 of the Constitution especially, you will see that the provision says that the state cannot make any criminal law and apply it retrospectively. Which means if the state makes a criminal law, it has to be applied prospectively only. So today I have made a law, the application of the law will be from the next date. Okay? Because when you have made a law, the law has to be passed, it has to be then signed by the president and then it has to be notified. तो समय लगेगा, लेकिन जब नोटिफाई हुआ तब से इट कम्स इनटू इफेक्ट. सो बिफोर दैट whatever was the law, people will be punished as per the law. Okay, it is a limitation on the state power. Why it is a limitation?
Suppose there is a party in power. मनुष्य को तो आप नहीं बांध सकते ना, वो तो पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है. They will use, they will misuse, they will use all kinds of techniques to remain in power. So party comes to power in India, and the party finds that there is a person who is an opposition leader, and he is under one particular case which is there on trial. So the party will say that, okay, fine, let us change the punishment for that particular criminal act. Now what may happen, maybe when the crime was committed, the punishment was 1 year. But now, in order to ensure that the person's political career is over, they can act with certain vested interest. They can make a new law, and under that new criminal law, they would say that for this crime, the person is going to be behind bars for 15 years. And another additional 10 years, if you are engaged into that crime, they will again write it into the law that that person, for after completing 15 years of punishment, that is jail, he cannot fight for election another 10 years. 25 साल निकाल दिया. अब हमारे देश में युवा लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है. वैसे अलग बात है कि 40-50 में भी राजनेताओं को युवा ही कहा जाता है, बट वो अपनी पॉलिटिकल युवा होने का एक पैमाना है. दैट्स अ सेपरेट इशू. बट अगर 25 साल किसी को आपने राजनीति से दूर कर दिया बाय फ्रॉम अ बैक डेट, सो दैट दैट पर्सन इज ऑल्सो involved into it, then what may happen? You can actually put the whole opposition and adversaries, and you can wipe out their political careers, which means you can misuse it. But Constitution ने जब लिखा that no, criminal law can be applied retrospectively, then it means it is a limitation on the powers of the lawmaking body. Civil laws बना सकते हैं आप, you can apply it retrospectively, but not criminal laws, because it is barred by the Constitution of India. Okay, that is what I mean when I say. I told you, I gave you another example. रॉन्ग साइड के लिए क्या होता है? ये कोई लॉ नहीं होता, ये रूल होता है. These are rules and regulations. है ना? और इसको तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है ना. तो रॉन्ग साइड चालान के लिए कह रहे हैं ना आप. तो जब से आया तब से होगा. ये थोड़ी कि आपको 1 साल पहले किसी ने पकड़ लिया था रॉन्ग साइड चलाने के लिए, तो जब से आया तब से होगा, सेम अप्लाई होगा. क्योंकि मान लो एफआईआर है तो इसका मतलब है क्रिमिनली प्रोसिक्यूट हो सकते हैं ना आप, उसमें सजा भी होगी तब, है ना. तो दैट इज जब से हुआ, जब से रूल्स हमने नोटिफाई किया, उस दिन से वो लागू होगा. तो अगर कोई पुराना केस है तो उसमें ये नया रूल लागू नहीं. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. मतलब ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये लिमिटेशंस ऐसे आप सीख सकते हैं. एक बढ़िया एग्जांपल लिमिटेशन का, जो हम कह सकते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करता है. सो वी कैन से इट इज द केशवानंद भारती जजमेंट, है ना. क्यों? क्योंकि even if I have said that the constitution is the supreme law of the land, but there has to be a body which has to uphold the supremacy of the supreme law of the land. Legislature will not do that. They are lawmaking body. They will always want to make laws which they think that is superior over every other thing. Because ultimately they are the ones who get votes from the people, win elections. They promise to the people. And therefore they would say that because we have promised so many things to our people, so we need to be a bit independent here. We have to implement our promises, and for that we need lawmaking. आप खुद सोचो, तो अगर संविधान उनको रोकता है तो उनका लॉ तो इलीगल हो जाएगा ना. जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं. आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग. Now everybody was fighting for India's independence. You know that India was a very poor society. I mean, we were a very rich society at one point of time in history. Or maybe we think that we were rich. I don't know that. Exactly, I have no idea because I have not seen the per capita income data. But yes, we had a very enormous contribution in global GDP. But these data are a bit misleading also. That's why. But still, मान लो सोने की चिड़िया कहते थे, तो हम मान लेते हैं. कौन कहते थे ये मुझे नहीं पता. But people used to, we have grown up listening to this particular phrase that India used to be the सोने की चिड़िया. So probably we were a bit rich.
which means we were very resourceful, and therefore India was open to so many attacks from outside because they wanted to come and take our resources. You know, they want to loot our resources. We could say that. When the British left us, we were one of the most impoverished nation of the world. दुनिया के सबसे गरीब देशों में हमारी गिनती थी. समाज एकदम गरीब था. या तो आपके पास एकदम हाई क्लास थी और उसके बाद सीधे लोअर क्लास थी, कोई मिडिल क्लास नहीं. क्यों नहीं था? बिकॉज आई मीन वी वर अंडर colonialism, and colonialism rule was all about our exploitation. Major exploitation was definitely economic exploitation. So, you know, when this Chandrayaan mission was launched, sorry, Mangalyaan, Chandrayaan. What was the mission? Chandrayaan, है ना? Chandrayaan. So, successful mission. So, India also became one of the few countries who had that capability to actually put something on moon. So we said that we have put a satellite over there, and we had that, you know, technology through which, you know, we could actually put a satellite, and then we can be actually detached. The satellite could detach, and then rovers were there. So which means they would actually move into different places, and they would keep on sending us data. So the West did not like it. They said, ये सब सपेरों का देश, पेड़ पे रहने वाले लोग, इनको मून पे पहुंचना है. तो उनको बड़ा बुरा लगा. जिसे खास तौर पे हमारे अपने कॉलोनियल मास्टर को ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो अब तक नहीं कर पाया. Despite looting the wealth from the entire world, they have not done that, which means they have not advanced to that stage. So many memes and so many cartoons were drawn about India, critiquing that we were living on, like, कार्टून में है कि हम लोग पेड़ों के ऊपर रह रहे हैं, और या कोई ऐसे सपेरा ऐसे कर रहा है, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, ये सब हो रहा है. और उसमें फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं न्यूज चैनल्स में, दे वर डिबेटिंग दिस इशू. सो इन इंग्लैंड वन ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स सेड दैट वी वांट आवर एड बैक, सो वी हैव गिवन सो मच ऑफ एड टू इंडिया, यू नो, सो वी हैव, so why would India take our aid? Country which can go to moon, I mean, they don't need aid. And now we are not taking aid also. We are into that stage कि aid वेड नहीं मिलता. पुरानी बात. चलो ठीक है, aid दिया होगा, हमें मानते भी हैं. तो हमारे यहाँ से भी एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अब शायद उन्होंने जर्नलिज्म छोड़ दिया. She has announced that she is quitting journalism. She is doing something in terms of like managing or something like an institution. So she used to do one program which was called फर्स्ट पोस्ट पे वो करती थी, है ना, Vantage. So that was the program she was, and I heard she actually gave a very good reply to that issue. She said that, what about India's bill? So you send your bill and we'll send our, and it would be roughly in, you know, it would be roughly somewhere between 40 to 45 trillions. Yeah. And she says that I am just taking a conservative estimate. ठीक से हिसाब करेंगे तो हो सकता है इससे भी ज्यादा हो. So you give us our 45-50 trillions and take your aid money back. Because when you are a colonial power, you should know that the very impoverishment of the country actually emerges out of your exploitation, the economic exploitation, to be precise. So when people are impoverished, then how do you create a society where people have some work to do? You can't industrialize a nation in 5 years, 4 years, or 2 years. It's a long drawn process. So at the time, the major issue with people was that they should be given some land. जमीन अगर हो जाए तो मैं उस पर अपना कोई काम कर लूंगा, क्योंकि देश में सबसे बड़ी जो आबादी थी वो क्या थी? लैंडलेस पेजेंट्स थी. क्यों था ऐसा? बिकॉज अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जमींदारी बना दी थी. So all the lands were with the zamindars, which means even if there was a village and village had huge land, but only one family or person owned the entire land, and people were actually forced to work on those lands. So zamindari was something which was not allowing this country to become economically prosperous, or you could say that distribution of wealth, if state has to do, has to be in the land resource. So while independence movement, we had promised to the people that, you know, when India becomes free, people will have their own land. The state will ensure that people will have their own land. The landless will have their own land.
Now India becomes free. In fundamental right, we say there is a right to property. So people whose land were taken by a law, they went to the High Court, Supreme Court, and the court said that no, this law is illegal because it violates right to property. Okay? This also shows that there is a limitation which the Constitution has put. कि आप जो कुछ भी करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर सकते हैं. ठीक है. तो अब लोगों को लगा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें कि अगर राज्य चाहे तो पब्लिक पर्पस के लिए लैंड ले सकता है, ये अच्छा आइडिया है. क्योंकि अभी तक क्या था, एक ऑर्डिनरी लॉ से आप लोगों की जमीन ले रहे थे. बिहार ने एंटी जमींदारी एबोलिशन एक्ट बना दिया, उत्तर प्रदेश ने बना दिया, मध्य प्रदेश ने बना दिया. दिस वर स्टेट लॉज. क्योंकि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द यूनियन पार्लियामेंट. So everybody said when these laws were all struck down by the courts, then all the chief ministers made a request to Pandit Nehru that why can't we have a amendment of the constitution so that we will allow these land reform laws to be validated. And you know what happened? When the first amendment came, in that constitutional amendment, Article 31 was amended. Article 31 was about right to property. And it was applied retrospectively, which means to save all the laws, it was applied from a back date. 26th of November, 26th of January 1950. That was the date on which the constitution came into existence. It was enforced. Which means it was a civil law. वहां किसी को punish नहीं कर रहे थे, किसी को सजा नहीं मिल रही थी. तो civil laws हम retrospectively apply कर सकते हैं, लेकिन criminal laws नहीं कर सकते, ऐसा constitution कहता है. It's also a great limitation on the powers of the state. Now other thing जो इसके साथ हमें समझना था वो ये है कि who upholds the supremacy of the constitution. So we all know that it is judiciary's task, that judiciary upholds the supremacy of the constitution. So constitution is supreme, no doubt, but who ensures that the constitution is a supreme document? The judiciary. Which means you cannot violate the constitution. ये ध्यान सुप्रीम कोर्ट का है, ये ध्यान हमारी जुडिशरी का है ना, हायर कोर्ट्स का है कि you should not through a law or through even executive action violate the constitutional law. ठीक है. लेकिन अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ करने से हमें रोकता है, लेकिन अगर हमने अमेंड कर दिया तो फिर तो हम वो कर सकते हैं ना. And who has the power to amend the constitution? The parliament, the legislature. तो अब तो यही बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, but 368 says that legislature can amend the constitution, और उसमें प्रोसेस लिखा हुआ है. The only thing that the judiciary will check is that whether the amendment was done by following the correct process or not. That's it. तब तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है. फिर वो कोई भी कानून है उसको बदल देगा. आप सुनते हैं ना आजकल डिस्कशन, संविधान बदल देंगे. हाँ, कितना पॉपुलर हुआ था ये एक तरह से कोर्ट कि भाई संविधान ही बदल देंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है. उनको बताना चाहिए था कि जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, आप चाह के भी संविधान नहीं बदल सकते. Why? Because if you change the constitution and the Supreme Court will look at, when you change the constitution, which means you will amend the constitution. Now when you amend the constitution, it will be challenged in the Supreme Court of India. So judicial review, Supreme Court will see that whether you have violated the basic structure or not. So this judgment is very, very important, which is Keshavanand Bharati versus State of Kerala, 1973. We will actually take a long time to study this judgment, but I am just quoting this judgment right now because one of the major doctrine of basic structure which the Supreme Court came up in this particular judgment is a landmark case and a landmark example or instance to demonstrate that basic structure doctrine is a great limitation on the powers of the parliament, powers of the legislature, law-making powers or amending powers of the legislature. Because if this doctrine is not there, then you should understand that for all practical purpose, the legislature is free to amend anything and everything in the constitution. हालांकि इस पर डिबेट है, अलग अलग जजमेंट्स हैं, तो वो हमें पढ़ना है. फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, 21st, ये सब समझ के पढ़ना है. तो ये डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है. बट दिस इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज, बिकॉज इफ आई एम सेइंग दैट यू हैव अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन,
then how will constitution remain a supreme document? Wherever you have problem, you will amend it. इतनी बात है ना, जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच सुप्रीम कोर्ट वही तो पढ़ेगी ना, और वो कहेगी संविधान में है क्या नहीं. They just have to interpret the constitution. But when Supreme Court said that no, you have the power to amend any part of the constitution, including fundamental rights. But इस judgment में कोर्ट ने कहा, but you can't amend the basic structure of the constitution. ऐसा क्यों कहा? Because this implies constitutionalism. Because if basic structure doctrine was not used by the Supreme Court of India, then you could have seen a very different constitution in India by now. There was an attempt which was already made once, the 42nd Amendment. 42nd Amendment is not an amendment that has amended one provision of the Constitution. It has amended hundreds of constitutional provisions. जहां जहां उनको लगा कि सरकार को दिक्कत हो रही है इस लॉ से, संविधान के, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करा दिया. But when they lost power, then the Janata Party government came to power. They restored the constitution to its originality by 44th Amendment. But you know, this power will always remain with the legislature. So this judgment is very crucial. The Keshavanand Bharati judgment is very crucial because it is this Keshavanand Bharati which has upheld the supremacy of the constitution plus the idea of constitutionalism in India. Because constitutionalism can only remain in force if there is limitations on the powers of the state, any type of power, be it legislative, executive, or even judicial power. There has to be a limit to everything. None of the power can be absolute or absolutist, because the moment you make absolute, any power absolute, then that power could be misused and it could be like an end game for a common man or a common person in any country. So, when the Supreme Court used this doctrine of basic structure, it's a classic example of ensuring constitutionalism in India. So that you have the power to amend by 368, that's the interpretation, but that power is also not absolute. You have to act within the limits of the doctrine of basic structure of the constitution. So that when you amend the constitution, you can't amend the basic structure of the constitution. कल मैंने आपको एक analogy दिया था कि कैसे आप समझ सकते हैं what is basic structure. You know, so something which is the basis on which the constitution is based, the constitution stands, that is basic structure. Removing that, if the whole constitution comes crashing down, which means that pillar is basic structure. While other changes can be done by Article 368, which does not change the basic structure of the constitution. ठीक है, इसलिए इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए केशवानंद भारती versus State of Kerala, 1973. So the judgment was made on 24th of April 1973. Okay. So as I've explained, so just write down one more point on it. The Supreme Court, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके लिए in terms of how courts have been the basic custodian of the constitution, how courts have acted as custodian of the constitution so that they have preserved the constitution by ensuring that India always works under the spirit and idea of constitutionalism. Okay, Supreme Court came up with the basic structure doctrine which is also an implied implied limitation on, which means what does this imply? That there is a limitation on, implied limitation on the amending powers, implied limitation on the amending powers of the parliament.
amending powers of the parliament. इसका मतलब क्या है? जो मैंने कल एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज इक्वल टू लिमिटेड गवर्नमेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल. That's basically the idea. Now, if we move forward, why we need constitution? So we also need constitution because we have to understand the idea of separation of power. It's a very popular idea. When in the modern world, when the first constitution was written in America, they actually used these doctrine. Both the doctrines they used. They basically ensured that they were able to create such a constitution whose basis was separation of power. ठीक है? आप खुद ही सोचो कि पावर तो अलग अलग नेचर में होती है, अलग अलग प्रकृति हो सकती है उसकी. किसी को कानून बनाने की शक्ति हो सकती है, किसी के पास कानून को इंप्लीमेंट करने की शक्ति हो सकती है, किसी के पास कानून को इंटरप्रेट करने की शक्ति हो सकती है. लेकिन अगर सभी शक्ति एक ही संस्था को दे दो, जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे भी बैठेगी. ठीक, प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, होम मिनिस्टर सीनियर मोस्ट जज होंगे. ठीक, मान लो यानी एग्जीक्यूटिव इज गॉट जुडिशियल पावर. दिस व्हाट आई वांट टू से. सपोज योर एग्जीक्यूटिव आल्सो हैज जुडिशियल पावर. सबसे ज्यादा लिटिगेशन में कौन होता है? सरकार. आप देखते हैं ना, जितने भी केस का नाम पढ़ेंगे, आप मान के चलिए 70 से 80% केस में कौन है? गवर्नमेंट है वर्सेस, और सरकार खुद बैठी हुई है. सरकार की कोई पॉलिसी है अंडर क्वेश्चन और सरकार खुद उस पर जजमेंट देगी, है ना. तो ऐसा हो सकता है कि आप जो व्यक्ति खुद कटघरे में खड़ा है उसको आप जज की कुर्सी पे बैठा दो कि नहीं तुम ही जजमेंट करो. हाँ, ये ठीक होगा? तो ये होता है कि अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी पर संविधान नहीं बनाते, then it also is a big problem. So constitution making actually teaches us that the art of constitution is that we actually want separation of power in the state. We don't want concentration of power in one or the other institution, because if that happens, that state becomes an authoritarian state, which means all authorities in one form or one arm of the state. So executive have all the authorities. So executive will also make laws, they'll also implement laws, they'll also interpret laws. तो शहंशाही हो गया वो, है ना, जज जल्लाद सब वही. तो फिर मिसयूज होगा. तो ऐसे में अगर आप सोचेंगे कि आपके जीवन में कोई सुरक्षा हो, तो कौन सुरक्षा देगा? सुरक्षा के लिए आप कहां जाएंगे? सरकार ने तो लॉ बनाया है, उससे बोलेंगे भाई तुम्हारे लॉ से मुझे दिक्कत है, तो सरकार क्या कहेगा? छोड़ के चले जाओ, जहां दिक्कत ना हो वहां जाके रहो. सरकार तो यही कह सकती है. मतलब अगर मैं ज्यादा जिद करने लगूं सरकार से, फिर मैं एग्जीक्यूटिव के पास जाऊंगा, हमने आपको वोट दिया था, इतना बड़ा देश है, तुमने वोट दिया, इतने सारे लोगों ने वोट दिया, तभी तो सरकार बनी, कुछ नहीं कर सकते, ये तो लॉ बन गया, अब इसी के साथ जीना पड़ेगा. फिर आपने कहा पर मेरा भी अधिकार है कुछ, तो फिर आपने कहा ठीक है ऐसा करो, जुडिशरी में चले जाओ, उसको जाके समझाओ अपनी बात. फिर गो एंड पिटिशन. अब वहां आप देख रहे हैं कि जिनसे आप मिलकर आए वही आकर बैठ रहे हैं. अच्छा यहाँ भी आ गए तुम, विल यू गेट जस्टिस? That's the problem. That's why there has been this very idea that if you want to create authoritarian rules, if you want to create totalitarian states, where every institution is compromised because all powers flow to one person or one institution. Totalitarianism is largely associated with those dictatorial states under fascist and other kind of governments where we have one supreme leader and supreme leader has all powers. When there is fascism, Nazism, like in Italy and Germany, then whatever Hitler said, that was law. Whatever he did, that was the work of the executive. And whatever he said, that was judgment. So there was nothing called a supreme law through which governance would be practiced. Because total power, nature of power was associated with one man, one person. And he was called as the supreme leader. He called himself Führer. That was the idea. Now, these kind of states will actually only misuse power. And you have seen the result of all this. Whether it is state like fascist state, whether it is state like the communist state, they have all been dictators, if I say this in simple words. But why they were dictators? Because there was no separation of power in these states. So when you make a constitution,
This is your conscious attempt that you not only establish a supreme law of the land, you also ensure that the powers remains divided in different arms of the state with different people, so that one person cannot indulge into the activities of others' domain. We are a country, like we are parliamentary system. In our country, there is not complete separation of power. We have partial separation of power, because in our country, the executive and the legislature, they are in one place, which means executive is part of the legislature. प्रधानमंत्री बैठते हैं सदन में, हमारे सारे मंत्री सदन में बैठते हैं, तो ये जितने एग्जीक्यूटिव हैं वो कहां बैठ रहे हैं? लेजिस्लेचर में बैठ रहे हैं. तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज फ्यूज्ड. Judiciary is separate. That is why we say that in parliamentary system you have a partial separation of power. But when I'm reading separation of power, it comes from the US practice. And US had a complete classic separation of power. Where, have you seen Donald Trump any time sitting in any of the US parliamentary legislative bodies like the Senate or the House of Representatives? No, because in America you are not required to be a member of the House to become the President or the Council of Minister. President जिसको बना देगा Council of Minister वो बन गया. यानी प्रेसिडेंट निकला अपने घर से टहलते हुए, सामने किसी व्यक्ति को देखा, तो अच्छा आज तुम हमारा डिफेंस मिनिस्टर हो. अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज ही इज अमेरिका सिटीजन, दैट्स इट, बन सकते हो. क्यों? क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हमारे देश में आप किसी को बना देंगे तो संविधान कहता है within 6 months you have to get yourself elected in the house, because in our country the executive has to be a part of the legislature. But still what we have done is we have also separated power decisively. It's just that we are a parliamentary system, that is why these kind of mechanism do come. But what is this idea of separation of power, or what is this theory of separation of power? इसकी बात सबसे पहले की थी मॉन्टेस्क्यू ने. So Montesquieu is a French philosopher. ठीक है, फ्रेंच फिलोसफर थे, एंड ही स्पेंड सो मच ऑफ हिज टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट पावर सो दैट यू कैन हैव प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम द आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट. सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, सरकार अपनी शक्ति बहुत आर्बिट्ररी यानी बिना किसी नियम कानून के इस्तेमाल ना करे. एसी स्लो करा दें, एसी तेज. आप लोगों ने कहा होगा तभी तो एसी चला होगा. हाँ, आधी क्लास तो ऐसे बीमार हो जाएगी. सो वी हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस फॉर अस. सो ही राइट्स अ बुक दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ लॉज. 1784 में लिखते हैं ये किताब. एसी बहुत फास्ट है, कम कर दीजिए. Spirit of Laws. Okay, that's the book. And in this book, he gives us more or less an understanding of what he means by separation of power. So, पहला स्टेप तो हमने पढ़ लिया. सेपरेशन ऑफ पावर में उन्होंने 2 स्तर पर सेपरेट किया पावर को. इस किताब में उन्होंने पहली बात यह कही कि जो पहला स्टेप है वो है कि हमें हर तरह के पावर को लिमिट करना है. There has to be limitations of legislative power, there has to be limitation of executive power, there has to be limitation of judicial powers, which means all powers, they have to be first limited. हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप है कि गवर्नमेंट शुड बी अ लिमिटेड गवर्नमेंट. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. और यू कैन से दैट व्हाट यू आर डूइंग इज, मैं यहां पावर लिख देता हूं, दैट पावर हैज टू बी लिमिटेड. So there has to be limited power in different organs of the state, what you call as the government as well. And second step he says कि अब जो हमने सबकी शक्ति लिमिट कर दी, तो वो कहते हैं कि second step में the limited power has to be separated. So whatever power that you see
which you have limited. So law making power is limited, but law making power has to be separated from law implementing power. Law implementing power has to be separated from law interpreting power. So put a restraint limit on all the powers first. And then what you do is you apply this logic that you separate all these power in different institutions. Okay. That is where you get the idea of separation of power. US became the first modern day world country nation which actually implemented the ideas of Montesquieu in true letter and spirit. तो यूएस ने एक बड़ा काम किया, टोटलिटी में इसको इंप्लीमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड यूनाइटेड स्टेट in order to apply separation of power logic, therefore their system is called presidential system. In the parliamentary system, there is not strict separation of power like the US system. We have a partial separation of power, because in our parliamentary tradition, the legislature and the executive, they are fused together, which means it is a compulsion in the constitution that the executive has to be a part of the legislature. हमारे एग्जीक्यूटिव ऐसा हो सकते हैं कि हमारे यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर बने कोई बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कहीं प्रोफेसर हों किसी यूनिवर्सिटी में, और उनको कहा कि आप आज से आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो अब फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, उनको सदन में नहीं जाते, सदन के मेंबर नहीं है, सीधे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। ये अमेरिका में हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका में क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनको मिनिस्ट्री दी जाती है। सो इट्स बेसिकली अ रूल बाय एक्सपर्ट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्योंकि शर्त है कि आपको चुनाव जीतना है, तो कभी कभी बड़े होशियार लोग चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अगर आप देखें तो लोगों के पास एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड में जितने भी घनघोर अपराध हैं, अगर आपने नहीं किया है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और मतलब ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जनता आपको नहीं चुनेगी, जनता भी सीरियसली नहीं लेगी। आप बोलिए कि मैं प्रोफेसर हूं और मैं IIT में पढ़ाता हूं, तो कहेंगे तो क्या हो गया, हमारे यहाँ आइए 2-4 दिन में आप हमसे पढ़ने लग जाएंगे, मैं सारा ज्ञान है। तो वहां चाहिए एक खास तरह। मैं इसरो का साइंटिस्ट हूँ और मुझे लगा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लगा नहीं तुम सेवा नहीं कर पाओगे, पहला समस्या होगा भाग खड़े होगे, तुम्हारे लिए नहीं है राज्य। यहाँ वही काम करेगा जो यहाँ टिक के रह पाएगा, इसलिए वो अपने हिसाब से लोगों को चुनते। तो अब सोचिए, तो जो व्यक्ति चुनाव की बाध्यता से आएगा, जरूरी नहीं कि वो बहुत एक्सपर्ट हो किसी एरिया में, है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स अपने आप में एक फुल टाइम काम है। अगर आप पॉलिटिक्स में चुनाव जीत रहे हैं और उसमें एक्सपर्ट हैं, तो किसी और चीज के विशेषज्ञ होने का समय कहाँ है आपके पास, क्योंकि आपको तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालना है एंड यू हैव टू विन अगेन। और फिर आप सोचिए कि नहीं इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं, थोड़ा डिफेंस का भी ज्ञान ले लेते हैं, वो नहीं कर सकते आप। इसलिए पॉलिटिशियन किस पर रिलाई करेंगे, आप जैसे लोगों पर रिलाई करेंगे कि भाई हमारा सारा काम करके हमको समझाओ कि क्या करना है। यहाँ तक कि जब उनको कुछ बोलना भी होगा तो आप सब कुछ होमवर्क करके देंगे कि सर ये प्रश्न है, इसका ये उत्तर है, आपको बस खड़ा होना है और इसको पढ़ देना है। वो हम नहीं मदद कर पाएंगे, वो आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। So that's the reason. So parliamentary system में you will not have experts, but in presidential system you will have exceptional people occupying the seat. Why? Because they have this luxury of choosing anyone, because they do not require to be a member of the house. So they're not member of the house. None of them are. है ना? प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ द हाउस होगा तभी तो, किसी न किसी हाउस का होना चाहिए। तो राजीव गांधी बन गए विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त है 6 महीने में जीत के आओ। एक चीफ मिनिस्टर थे, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, मेंबर ऑफ द हाउस थे ही नहीं, और 6 महीने बाद जिस चुनाव में वो लड़े, मेंबर ऑफ द हाउस बनना था उनको, चुनाव भी हार गए। कभी कभी ये भी है, अब चुनाव हार गए तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा फ्रॉम योर सीट, बिकॉज इट्स रिक्वायरमेंट, you have to be a member of the house. So parliamentary system has therefore a bit of partial separation of power. It does not mean that law making parliament nahi karta, yahi karte hain, but executive plays a decisive role because they are themselves part of the legislature. So that's why we say in parliamentary system it is largely controlled by the executive. Whatever will happen in parliament, the executive have a larger say over it. Same cannot be said in America, because executive is not even part of it. So whatever will happen in legislature, in House of Representative or the Senate, they'll decide. The people, the members, they are the ones who are going to decide. They'll not operate as per
the demands or as per, the plannings of the government, because they are out of it. So I think if you look at the Montesquieu's idea, where he has taught us, if I say this in simple terms, these are the two things he pointed out. He said that when you create constitution, you have to focus on two things first. First, you have to limit the authorities of governmental powers, and secondly, you have to divide each power into different institutions. That's why we see legislature, executive, judiciary. You generally reference देखते हैं, उसका कारण यही है, because this is the best way we can understand the idea or the logic of separation of power. देखिए, United States was the first nation United States, US was the first nation which implemented Montesquieu's idea. First nation which implemented Montesquieu's idea in totality, full stop. Therefore, United States has complete separation of power. United States has complete separation of power under the presidential system, while India has partial separation of power under the parliamentary system. ठीक है, इसी से फ्लो करता है एक और आइडिया जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ checks and balance. So whenever we discuss about checks and balance, people think that this is a discussion which is trying to establish superior or inferior institutions, which means people think that, okay, in checks and balance, you are trying to say that legislature is more superior to executive, or the other way around, executive is more superior to legislature, or judiciary is more superior to both executive and legislature. You have to understand that this is not what is being said here. Checks and balance is simply trying to tell us that when we have already created the constitution by creating a limited government, which means government and its power has already been limited, which means government has been limited in its authority, governmental powers have been limited in its authorities. Now we have separated those powers, and after separating those powers, Montesquieu said, and this is practiced in America as well, that there has to be checks and balance. Why separation of power? Because each separate institution will check the power of the other. Because power will be misused even though there is limited government, but will there not be tendency to actually do something which is not within their domain, do something which is outside the scope of their power? But if you do it, then what are the repercussions? That is checks and balance. So if legislature does something which is violative of the idea of constitutionalism, then there has to be an institution which should check it and say, you can't do this, this is illegal. That is called checking and balancing power, so that the power always remains balanced. Balance in the sense that we are not saying that one institution who has checked becomes superior to the other. Because in other instance, legislature can check over the power of the judiciary also by means of appointment, by means of impeachment, removal. So
This is what we understand by the logic or the doctrine of checks and balance, which means why do you want to check each other's power? So that you balance the power within each institution. None of the institution does anything in terms of their designated powers within the constitution which will create problems with the equation of balance of power. तो शक्ति का संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है. The moment there is a problem with the balance of the power, then you could actually fall into chaos. You would actually fall into some sort of a anarchy, where who is the biggest sufferer? The people. So you can't have a country which is governed by judiciary. Ultimately, governance has to come from the government, that the executive. You can't have an executive which is also doing judicial function. Judicial functions will be done by judiciary. So that's all powers separated. All powers, when they are separated, now all the other institutions exercising those power, they will be acting as a check on each other's power, so that we remain within our limits and do not cross our limits. So checks and balance simply means that we are talking about all the power separated institutions where you have limited power has been separated. Now checks and balance said that each institution checks the powers of the other. तो चेक तो करना पड़ेगा ना, ताकि हम अगर गलती कर रहे हो तो हमें गलती सुधार दिया जाए. पर क्यों चेक कर रहे हैं? Why do you check the powers of the other and vice versa also? Because to balance the power. So power will always remain balanced in all these institutions as conceived by the constitution. Okay? So legislature will not do anything which it cannot do. And if it does, then there is an institution which will check it and then balance the power. Judiciary cannot do anything which it cannot do. If it does, then there are institutions which will check the power of the judiciary and again balance the power. Executive cannot do something which it cannot do as per the constitution. If they do it, the other institution will check the powers of the executive and balance it out. So that's basically the crux of the argument. ठीक? और एक जनरल डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं about the idea of constitutionalism. अभी तक मैंने कुछ लिखवाया नहीं है इस पे, मैंने बस समझाया था. So what is constitutionalism or what is the idea of constitutionalism? It is based on the principle that the powers of the government are not absolute, and it is limited by a body of laws called the Constitution. Full stop. So, the concept of limited government is the basic idea of constitutionalism. Constitutionalism.
and constitutionalism prevents absolutism and tyranny of tyranny, TYRANNY, tyranny of power. So now we have to move to the next stage now. So suppose we have to understand this concept within a framework. Suppose we are talking about our country. How do we see these being implemented? How do we see these being practiced? The very idea of constitutionalism. Because we have to understand new words now. तो ये constitutionalism सब समझ गए है ना? So constitution क्यों चाहिए हमें? Because without constitution there is very difficult to have constitutionalism. This is the basic purpose for which we need a constitution. And you have seen that what is constitutionalism? It's an idea which says that power has to be limited, because if power is not limited, then we have seen by numerous examples that governments have descended into absolutism and tyranny. यानी सरकारें अधिकतर एब्सोल्यूटिज्म पे चली गई या बहुत टिरेनिकल बनी, जहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कमी नजर आई जिन देशों में. अब आपके देश में मान लीजिए हमने आपको कुछ इंडिविजुअल राइट्स दिया, यानी व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्ति का अधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार. हमारे यहाँ क्योंकि हम लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हैं, तो मोस्ट ऑफ द राइट्स आर इंडिविजुअल राइट्स. देयर आर वेरी फ्यू राइट्स विच आर ग्रुप राइट्स. वी हैव largely identified individual, not we have identified people as part of the whole, that is community. So this is like basic premise on which liberal ideas have been constructed. So we are also inspired by that idea. So in our country also we talk about individual rights, जैसे fundamental rights हैं, freedom of speech and expression. तो हर व्यक्ति का है ना, ये थोड़े कि परिवार के हिसाब से दिया गया है, खाली पिताजी स्पीच बोलेंगे फ्री होकर के, है ना, बेटा नहीं बोलेगा, बेटी नहीं बोलेगी, पत्नी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल लेवल पे पिताजी बोलेंगे, और पिताजी से अगर आपको ऐतराज है तो आप अपनी बात बोलिए. अभी देखते हैं ना बाप बेटे में बड़ा थन जाता है, आजकल ज्यादा हो रहा है. तो पिताजी एक पार्टी के सपोर्टर है, बेटा किसी और पार्टी का सपोर्टर है, चुनाव आ गया और घर में एकदम घमासान है, और प्रेशर में कौन है? मम्मी है. अब दोनों तरफ से नाराज हो रहे हैं लोग और दोनों उनको मना रहे हैं, और मम्मी खुद सर्वज्ञानी, 5 बजे के बाद रोज टीवी डिबेट देखती हूँ, उनको सारे मुद्दे पता है, पूछता है भारत, सो नोज एवरीथिंग, वो चीख के वो सब चीज समझ चुकी हैं आवाज में. बट अगर इंडिविजुअल राइट्स है तो हम अब इसको, इस इंडिविजुअल राइट्स के एग्जाम्पल से हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझते हैं कि कैसे इंश्योर होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन आवर कंट्री. तो हमने अभी देखा कि एक बड़ा बेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन विल इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है. इट विल ऑल्सो इंश्योर सेपरेशन ऑफ पावर. Now, how do you ensure it? Constitutionalism. So now the next word that we have to focus on, or we have to try to understand, is that there has to be two things now. A, there has to be rule of law. क्यों? क्योंकि रूल किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने. और रूल आप भी बना सकते हैं एज लेजिस्लेचर, एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सब बना सकते हैं रूल्स, लेकिन all rules have to be consistent with the constitutional law or the rule. But who is going to ensure that these rules, if they are violative, will struck it down? Judiciary. तो हमें और क्या क्या चाहिए? तो इन सब को पूरा करने के लिए हमको रूल ऑफ लॉ चाहिए, कि कानून का राज हो. जैसे हम कहते हैं ना कि आज किन का राज है, तो किसी आदमी का नाम ले लेते हैं हम लोग, इनका राज है. डेमोक्रेसी में भी लेते हैं, अजीब बात है, राज हमेशा कानून का होता है. इंडिविजुअल इज जस्ट ऑक्युपाइंग अ चेयर. सो इट्स नॉट A, B, C और D's राज. इस गफलत में नहीं पड़ना है. हाँ,
They are just fulfilling their constitutional obligation, being in that seat. But राज किसका होगा? रूल ऑफ लॉ का, कानून का होगा. कानून का राज जहां होगा वही डेमोक्रेसी हो सकती है. जहां कानून का राज नहीं है, फिर वहां पे क्या है? वहां माफिया है. वहां पर कोई कानून ही नहीं है, जिसको जैसे मर्जी वैसे राज कर रहे हैं. तो वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना. लेकिन जहां रूल ऑफ लॉ है, तो अगर लाठी है भी, एक नहीं हजार भी, तो भैंस आपकी नहीं होगी अगर आपकी भैंस नहीं है तो. दैट्स द बेसिक आइडिया. सो वी आर सेइंग रूल ऑफ लॉ. सो हाउ डू वी सी रूल ऑफ लॉ? सो एक्चुअली रूल ऑफ लॉ कैन ओनली बी सिक्योर्ड इफ यू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. हमें कभी कभी मजाक लगता है ना, जुडिशरी को डिसीजन देती है तो हमें लगता है क्या जुडिशरी इज डूइंग ओवर द टॉप. सो ओटीटी नया शब्द आ गया ना, तो जुडिशरी ओटीटी कर रहा है. मतलब इट्स नॉट अबाउट नेटफ्लिक्स और वो सब. आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर द टॉप एज अ वर्ड. मतलब थोड़ा ज्यादा कर रहा है जुडिशरी, बट ऐसा नहीं है. जुडिशरी इज डूइंग इट ओनली बिकॉज जुडिशरी इज कंसर्न that if they do not protect law, rule of law, then rule of law will be compromised. And if rule of law is compromised, how would you have democracy in any country? How would you ensure, people's rights? How would you ensure protection of people's liberty? That's a question that one has to look at. So today we say that under constitutionalism, what is the framework that we have established in our country today? So out of this comes a very, very important concept which is called the concept of rule of law. यानी हमें संविधान को पढ़ने में, हमें संविधान क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान को इंश्योर करना है रूल ऑफ लॉ. संविधान ने इंश्योर किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर. अब संविधान हमें क्यों चाहिए? बिकॉज वी वांट कानून का राज, नॉट ए बी सी या डी का राज. ये अलग बात है कि हर आदमी के अंदर वो टेंडेंसी होता है कि वो भी अपने आप को एक बादशाह के तौर पे देखता है ना. इसलिए जब किसी को पावर मिलती है तो वो समझता है कि अब उसके हाथ से वो पावर कभी जाएगी नहीं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर पावर के इंतजार में बिता देते हैं. तो रोज सपने में वो पावर में होते हैं, लेकिन जब आंखें खुलती है तो देखते हैं कि नहीं, अभी पावर हमसे दूर है. पावर किसको सपने से मिल सकती है? जो इंटाइटल्ड होते हैं. मोनार्की. मोनार्की में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक परिवार में पैदा हो जाना है. आपके पास क्षमता है, क्षमता नहीं है, कोई नहीं पूछता. आप मोनार्की में पैदा हुए तो बस आप ही राजा बनेंगे. ठीक, राजा का बेटा राजा होगा, सुना था ना आपने. तो ऐसा होगा मोनार्की. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है? नहीं, डेमोक्रेसी में सत्ता उसी को मिलती है जो जनता तय करती है कि हाँ ये काबिल है हमारी नजर में. जनता गलती भी कर सकती है, दैट्स अ सेपरेट इशू. बट जनता अगर गलती कर भी देगी तो रेक्टिफाई करेगी, है ना. इसलिए हमारे यहां हर पीरियोडिक लेवल पे हमें जनता से राय लेनी पड़ती है. मतलब ये नहीं है कि एक बार चुनाव जीत गया तो कहे कि अब तो कम से कम 50 साल हमारा शासन होगा, 50 साल के बाद दोबारा हम जनता के पास जाएंगे, भाई क्या चाहते हो. नहीं, पीरियोडिक रिव्यू. मतलब तभी लेजिटिमेट है आप. एवरी पीरियड, कहीं पर 4 साल, कहीं पे 5 साल, वट एवर मे बी पुट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ पीरियोडिक रिव्यू. तो जनता ने अगर मान लो कह दिया कि हाँ तुम शासक हो मेरे, हो सकता है 4 साल बाद उसको लगे कि नहीं, अब ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति हो. तो पावर इज इन योर हैंड, यू आर द अल्टीमेट सोवरेन. एंड गवर्नमेंट whosoever is in power, they have to come and get themselves an affirmation from you every particular period of time. That is something which is very crucial. That happens in democracy. In China, the president says that he is a lifetime president. Can you do the same in India? Somebody was asking this question to me as well yesterday. You can't do that because it is a violative of the basic principle of the constitution, which says that there is a periodic review of the government in power by the people of the country. But in China it was done. राष्ट्रपति ने कहा कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग हैं जो सत्ता में कुछ गड़बड़ करेंगे. सभी एक आर्मी वाले को उन्होंने पनिश किया, उनको मिल भी जाता है कि ये अमेरिका से मिला हुआ था, और फिर उसके बाद वो अपने स्टाइल में उसको टैकल करते हैं. बट वट एवर इट इज, अब उनके देश का मतलब है, हमें तो कोई मतलब है नहीं उस बात से. हमें केवल एक बात से मतलब है कि वहां के राष्ट्रपति ने कहा that let us write in the constitution that till the time I am alive, I will be in the seat of the president. तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना है,
वैसे भी चुनाव जब होता है तो उसमें यस और नो ही वोट करना होता है ना, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज तो होती नहीं है। तो फिर चुनाव, जैसे मान लीजिए भारत में चुनाव है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, कम से कम 5-6 लोग तो होते ही हैं ऑप्शन में। उसमें कुछ लोग इसलिए होते हैं ताकि वो बैठ जाएंगे, कुछ पैसा मिल जाए तो वो नॉमिनेशन कराते हैं और इंतजार करते हैं कोई आए हमारे पास कि भाई आपके पास भी 200 वोट है, आप हमें समर्थन कर दीजिए। बट ठीक ठाक लोग खड़े हो जाते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप सेंट्रल स्टेट लेवल पे देखें तो 2-3 पार्टीज ऑप्शन में होती है। बट ऐसे कंट्रीज जहां पर देयर इज नो मल्टी पार्टी सिस्टम, देयर इज ओनली सिंगल पार्टी, यू डोंट हैव ऑप्शन। इवन इफ देयर इज इलेक्शन, दैट इट इज बिटवीन देम ओनली, so you'll not have like third party or second party contesting election. From same party people will be contesting election, तो उसका बहुत मतलब नहीं होता। So they can do it. So can you say that that country is basically based on constitutionalism? Because if you say that a president will be a lifetime president, that itself is like you are giving absolute power to the president, to the executive. That's the basic idea. So when we say rule of law का simple मतलब क्या है? That the governance of any country will based on a law, not the whims and fancies or principle of a man. ठीक है, जैसे मान लो मैं बन गया प्रधानमंत्री, तो अब मैंने कहा कि अब जो शासन होगा देश में वो मेरे हिसाब से होगा, यानी जो मेरे हिसाब से ठीक है वही ठीक है, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। तो मैं बोलूंगा, ऑर्डर दूंगा कि नहीं, देश में लोग लेफ्ट साइड की ड्राइविंग कर रहे हैं, है ना, मैं थोड़ा यूरोपियन माइंडसेट का आदमी हूं, सब राइट साइड से करेंगे ड्राइविंग। लेकिन रूल क्या है? लेफ्ट साइड से। तो समझ के रूल बनाया गया था। फिर मैंने कहा कि अब मैं सत्ता में आ गया हूं, तो इसलिए अब कल से जितने भी सरकार के जो प्रोग्राम्स थे वेलफेयर के, वो सब बंद हो गए। ठीक, सरकारी खजाने में जितना पैसा है वो सबसे पहले उसका इस्तेमाल मैं अपने लिए करूंगा, विच मीन्स मेरे प्रिंसिपल पे शासन होगा। मेरे प्रिंसिपल में हो सकता है कि मैं बोलूंगा कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि पढ़ाई लिखाई मत करो, सबको स्मार्टफोन मिलेगा सरकार से, रील बनाओ। पढ़ के क्या करोगे? और अगर पढ़ाई होगी तो रील बनाने की पढ़ाई होगी कि कैसे आप रील बना के पैसा कमा सकते हैं। माय प्रिंसिपल। सो आई विल कंप्लीटली चेंज एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज आई थिंक दैट इफ आई एम इन पावर देन रूल शुड बी बेस्ड ऑन माय प्रिंसिपल। दैट कैन हैपन व्हेन यू आर एन ऑटोक्रेट, दैट कैन हैपन इन कंट्रीज विच आर नॉट डेमोक्रेसी, दैट कैन हैपन इन कंट्रीज विच डू नॉट ऑपरेट ऑन rule of law, constitution, constitutionalism. But if you are a country which has constitutionalism, has a constitution based on separation of power, then there everything will be governed on the principle of law. जो कानून में लिखा हुआ है, हम हो सत्ता में या कोई और हो, everybody has to just observe the law, the principles of the law, and they have to operate the governance of the state as per the principles of the law. यानी जो लॉ में लिखा है, जो लॉ की प्रिंसिपल है, दैट इज माय प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, पीरियड। नॉट व्हाट आई थिंक इज राइट और आई थिंक इज रॉन्ग। सो यू कैन बी इन पावर एंड यू मे हैव योर ओन प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स और गवर्नेंस, बट इफ यू आर इन अ नेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ गाइडिंग लाइट देयर, एंड इट टेल्स यू दैट एवरी गवर्नेंस विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एनंसिएटेड, व्हिच मीन्स that rule of law in simple terms means that it is a law, it is a rule which is based on the principles of law and not on the principles of an individual or a person or a man. ठीक है? So एवी डाइसी ने इस पर एक कॉन्सेप्ट भी बताया हमें। एवी डाइसी इज अ ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, है ना, इंग्लिश ज्यूरिस्ट है एवी डाइसी साहब, एंड ही गेव अस अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. And he was telling us that if you conceptualize the idea, what does it mean? It means that nobody can have any kind of discretion in the exercise of power. Because the moment you have discretion in the exercise of power, then it becomes more and more arbitrary. So why rule of law is important? Which means law is always considered as neutral, not subjective. Law is not a product of one man's understanding. Law is always a product of collective effort by the society. So, what is stated in the law, you will ensure that you are not allowed to do anything arbitrarily. Because the moment you are not following law, which means you have more and more discretion. यानी आप अपने मन से काम कर रहे हैं, और जब आप अपने मन से काम कर रहे हैं तो आपका काम
गैर कानूनी हो सकता है, आर्बिट्ररी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो विच मीन्स लॉ हैज बीन स्टेटेड, मेड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द माइंड ऑफ सो मेनी पीपल, पार्ट ऑफ द ग्रुप, एंड देयरफॉर उसमें विजडम है, टाइमलेस है, हिस्ट्री से भी आ रहा है बहुत कुछ, एंड देयरफॉर व्हेन यू इंट्रोड्यूस इट दैट बिकम्स योर गाइडिंग लाइट। सो आर्बिट्रेरीनेस की उसमें गुंजाइश नहीं होती है। देयरफॉर यू कैन एस्टैब्लिश a society, just society, democratic society, and ordered society. That is what we have to understand by the logic of the idea of rule of law. शासन किसका? व्यक्ति के आर्बिट्ररी माइंड का नहीं, रूल का, जो ऑलरेडी एक स्टेटेड है, न्यूट्रल है, शासन उसके आधार पे करना। That's the idea. Rule of law. It refers to a government. It refers to a government based on the principles of law, and not of man. A.V. Dicey, एक बार फिर से हम लोग डाइसी को पढ़ेंगे, इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे कि रूल ऑफ लॉ के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे। आर्टिकल 14 में पढ़ना है, और अभी हम बस इनको इंट्रोड्यूस करेंगे नाम को। A.V. Dicey, अ ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, JURIST, ज्यूरिस्ट मतलब क्या होता है? somebody who is an expert of law, कानून विशेषज्ञ, कानूनविद। A British jurist has conceptualized rule of law and believed that discretion in the exercise of power results into arbitrariness. Discretion in exercise of power results into arbitrariness. 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 Next point. Separation of power refers to division of states' power and functions into three organs. That is legislature, executive, and judiciary. It prevents concentration of power. It prevents concentration of power in one institution. It prevents concentration of power in one institution. So which means you will never have concentration of power if you have separation of power. By providing, how does it do it? How does it prevent concentration of power? By providing a system of checks and balances. लेकिन एक और बात है कि अगर सारी संस्था को ये अधिकार है
तो इसका मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर हमें एक और चीज बताता है कि जितनी संस्था को जो शक्ति मिली है उस क्षेत्र में वो ऑटोनोमस है, उसकी स्वायत्तता, which means judiciary is independent and autonomous in judicial field. Executive is independent and autonomous in executive functions. Legislature is independent and autonomous in lawmaking functions. So that is also something which we learn from the idea of separation of power. देखिए, additionally, same paragraph. Additionally, it also ensures independence and autonomy of each organs of the state. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. इफ यू लुक एट आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 50 जब मैंने लिखा तो एक्चुअली आप देखेंगे ये डीपीएसपी का पार्ट, डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट के बाद. लेकिन इसमें एक निर्देश दिया गया है, इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व, विच मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम body of instructions to the government that the government has to introduce this in their policies. That is why we call it directive principles of state policy. So roughly I can say from 36 to 51 we have all these articles which comes under DPSP. Now within 36 to 51 I am writing about article 50. If you read article 50 you will see that even the constitution has given these message quite clearly to the state that the executive power has to be separated from judiciary, which means executive and judiciary, their powers cannot be colluded, their powers cannot be fused into one institution. इसलिए फ्यूजन अगर है भी तो वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का है, बट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर कंप्लीटली टू सेपरेट एंटिटीज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. तो उसमें ये क्लासिक एग्जांपल है अबाउट द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दैट इज फाउंड इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. यू कैन कोट दिस एज एन एग्जांपल एज वेल, बिकॉज व्हाट इट सेज, द स्टेट शैल endeavor मतलब प्रयास, endeavor to separate the judiciary from the executive. The state has to endeavor so that judiciary is separated from the executive. So state has to ensure that judiciary is separated from the executive. तो executive से हमें judiciary को separate करना है. एक क्लासिक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेपरेशन ऑफ पावर. यानी कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कह रहा है कि आपको किसी भी हालत में जुडिशियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को मर्ज नहीं करना, दे हैव टू बी इनटू सेपरेट इंस्टीट्यूशन. ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है डेमोक्रेसी में, शब्द आप सुनते होंगे, द आइडिया ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबल मतलब समझते हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं. रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या, जिम्मेदार. अकाउंटेबल मतलब क्या, जवाबदेही. तो व्हेन वी लुक एट द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और रादर व्हेन आई से दिस कॉन्सेप्ट दैट वी आर ट्राइंग टू रीड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज if you understand this concept, then it is easy for me to discuss about the idea of constitutional morality, because this word became very popular when in the Sabrimala judgment Justice Chandrachud actually used this word in order to argue that when judiciary is looking into a question, even if it is a question of faith, then judiciary will not be
looking into the question from the point of view of the morality of the practitioner or the point of view of the morality of the majority community. Judiciary is going to judge these questions on the basis of morality of the constitution. For example, हमारे देश में संविधान की morality क्या है? Equality. Equality is a very important moral principle that we find in our constitution. Liberty, equality, है ना, and non-discrimination. मैं moral questions की बात कर रहा हूँ. Fraternity तो एक ideal जैसा है, but अगर हम इक्वालिटी को देखें तो वो एक हमारे लिए मोरालिटी भी है कि भाई क्या सरकार कभी या देश या संविधान कोई भेदभाव करे किसी के बीच में? हमने कहा नहीं, इक्वालिटी की बात करते हैं, और इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑल्सो. नाउ इफ सबरीमाला प्रैक्टिस वाज देयर व्हिच सेड दैट females between 10 to 50 years they can't enter into the sanctum sanctorum of Lord Ayappa, then the word was used in this context where they said that ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो मेजॉरिटी है उसकी मोरालिटी है कि नहीं, इनको प्रवेश नहीं होना चाहिए, इनकी प्रवेश ना होना उनके लिए मॉरल है ना. क्यों? क्योंकि जो एक बड़ा तबका था जो उसको प्रैक्टिस करता था, उन्होंने यही कहा कि भाई ये हमारी प्रैक्टिस के कंसिस्टेंट ट्रेडिशन है, इसलिए हमारे लिए यही मॉरल है. आई बात समझ में? लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने यह कहा कि whenever we are judging these questions that what is moral or immoral, then what is the criteria a judiciary has to see? हम judiciary हैं. We will see what is the morality preached in the constitution. Does the constitution say so? And for them, he believed that no, the constitution has always been very clear in terms of morality, which is the morality based on equality. Equality, which means non-discrimination on the basis of gender, sex, race, class, caste, and other factors you could say. That is something which is very, very synonymous with this idea. Now we have understood everything. So the only one question that remains is, what is the idea of then responsible government? Because in a country with a constitution, you could also see the idea of responsible government. जो संविधान के साथ जिन राष्ट्र का निर्माण हुआ और जो डेमोक्रेटिक हैं, उन राज्यों में ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वो सभी राज्य उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भावना होती है. नाउ व्हाट इज दिस आइडिया? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज एन आइडिया दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड? सो responsible government means that I am sovereign, you are sovereign as an individual, then I would ensure that my government is responsible. But how do I ensure it? By ensuring that my government is accountable to me. Okay? If it is not accountable, then I'll change the government whenever the next time comes. Okay? So if you look at the very idea of this concept of responsible government, you will see that people are not directly going there in the parliament and ensuring accountability of the government. ये भी तो मुश्किल है ना. अब जैसे हमें सवाल पूछना है सरकार से, तो सरकार पूछने देगी? प्रश्नकाल खोल देगी गेट और कहेगी जिसको मर्जी आप आ जाइए, आज हम लोग 100 लोग ले रहे हैं, 100 लोग सवाल पूछ सकते हैं, और हम लोग वहां खड़े होंगे, स्पीकर साहब हमें मौका दिया जाए, और उसके बाद पूरा एकदम तामझाम होगा और फिर हम लोग शुरू करेंगे. तो फिर कौन पूछेगा हमारे लिए सवाल, हमारे बिहाफ पे सवाल? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पूछेंगे. तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ, आपको इसको हमें एकदम हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझना, बिकॉज वी आर नॉट अ मॉडल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. हमें डेमोक्रेसी भी पढ़ना है तो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है, बट दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो व्हेन आई से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, विच मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड दिस आइडिया दैट द पर्सन हु इज इन पावर, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे, they have to be accountable to the people also. So how do I ensure my accountability? My representative asks question during question hour, which means they ensure the accountability, and they criticize the government whenever there is a time to criticize. They can pass motions if they think that this government is not giving due accountability, if they're not acting responsibly. So we have so many mechanisms in the constitution, है ना. मोशंस बोलते हैं उसको. जैसे अभी एक मोशन लेकर वो आने वाले थे, है ना, स्पीकर साहब को हटाने का, कि दैट दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द स्पीकर ऑफ द हाउस. ठीक है, बस उसमें गलती ये हो गई कि उसमें डेट गलत लिख दिया उन्होंने. ठीक है,
ऊपर में जो पैराग्राफ था उसमें थोड़ा देखा नहीं, सबने साइन भी कर दिया और देखा ये तो 1 साल पुराना है इसमें डेट। ठीक है, उसका टाइम पीरियड होता है, हर चीज का एक समय भी होता है, तो दोबारा फटाफट टाइप कर लिया होगा उन्होंने। बट दिस इज व्हाट इट इज, अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप स्पीकर हैं लेकिन आप भी अकाउंटेबल हैं। यू कैन नॉट एक्ट विद डिस्क्रिशन। आप भी लॉ से बंधे हुए हैं, यू आर ऑल्सो बाउंड बाय द लॉ। एंड एज public representative, which means this is people representative, which means on behalf of the people, I have been assigned so many mechanisms, powers by the constitution through which I am ensuring the accountability of the state. So the government has to spend money. Can it spend money without approval of the parliament? No. Everything has to be approved by the parliament. Only then the government can spend even a single paisa from the exchequer of India. So we have many funds, and under these funds, the government money is therefore parked. But if you want to take that money out, first there has to be approval from the parliament. This is ensuring accountability. Plus, if you have spent something, I can very well ask question. फिर आपके पास you have a CAG, does the auditing, और उसकी रिपोर्ट के बाद हमें लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ था, तो फिर से accountability. So there are so many mechanisms. So, when we say responsible government, it means the idea is very simple. Responsible government says that the government has to be accountable to the people. उसके लिए mechanisms अलग-अलग हो सकती हैं. But the idea in a responsible government means that the government is responsible for all its action. And therefore, everything that it does, it has to give the accountability, जवाबदेही, to the people. Not directly, because we're not direct democracy, but through our public representatives. Definitely, there are so many mechanisms. These are ideas and principles of good governance, that you are bringing people more closer, whereby even a common person can ask question. But there are so many restrictions also, exceptions also. So it's always better that we have examples from the parliament, because that is more, one-to-one relation that you could see. RTI has its own limitation. Everything cannot be said in RTI. The government has so many exceptions. ऐसा कैसे पता है आपको? मतलब आपको क्या लगता है 8 दिया उसको? 8 दिया? नहीं, ठीक से पढ़ो. So with Bangladesh, we have so many agreements where we are building institutions, building infrastructures. So for that, this money has been allocated. Yani we are actually fulfilling our already agreed terms. Plus, how do you know that वो हमारे एंटी चल रहा है? सरकार तो वहां है ही नहीं. पहले सरकार तो बन जाने दो, चुनाव हो जाने दो, तो लेट द गवर्नमेंट बी देयर. और फिर देखो, अगर सरकार ये कहते कि नहीं, भारत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तब ना एंटी है. जो एंटी है वो तो पॉजिटिव हो जाता है आज के समय डिप्लोमेसी में. कैन यू लिव बाय बीइंग एंटी टू ईच अदर इन द नेबरहुड? केवल 2 ही देश रह सकते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान. बट अदर्स कांट लिव इन द सेम मैनर, बिकॉज बांग्लादेश इज सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंडिया. हाउ विल बांग्लादेश एक्सपोर्ट इट्स गुड? Bangladesh is also landlocked in many ways, not in the sense like many other countries, but Bangladesh को देखो तो Bangladesh is having a border that they share with India, and it is easy for them because they don't have that kind of infrastructure which we could provide to them. So Bangladesh is using India for all its transactions. तो बांग्लादेश की डिपेंडेंसी हम पे बहुत है. बांग्लादेश एंटी नहीं हो सकता. हाँ, ये हो सकता है कि बहुत इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं हो सकती, ये हो सकता है, ये होता रहता है, हर देश के साथ होता है. अब डोनाल्ड ट्रंप आए, वो वर्ल्ड फ्रेंडली नहीं है, तो वर्ल्ड क्या करेगा? 4 साल वेट करेगा, नया प्रेसिडेंट बनेगा तो कहेगा चलो अब ठीक हुआ अमेरिका. अब 4 साल वो मान के चल रहे हैं कि भाई 4 साल ऐसे ही धमाका होता रहेगा, 50%, 100%, 200%, जो मन में आएगा वो कर देंगे. बट आई मीन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, पार्टी टू पार्टी. बांग्लादेश हैज अ ट्रेडिशन वेयर देयर हैज बीन प्रो इंडिया पार्टी एंड प्रो China or Pakistan party. So whenever
the BNP has come to power, it is largely considered as pro-China, pro-Pakistan. Whenever Awami League has come to power, it is considered pro-India. So most of the thing that you see which has moved in India-Bangladesh relation has been during Awami League's tenure. That is Sheikh Hasina's tenure. Now there are every possibility that BNP can come to power in this election. But this time BNP is a very new kind of party because all the old BNP members, they are no more, which means Khalida Zia is no more. So we are going to start on a clean slate. Maybe this time there will be Khalida Zia's son, and Khalida Zia's son has some Western exposure in his education and things like that. So we could very well believe that he'll do something which may be very pragmatic. So foreign policy operates on pragmatism. ऐसे public opinion पे नहीं होता. वो टीवी पे देखा चार चीज और उसमें कहा कि एंटी इंडिया हो गया, होने दो. There are forces which are anti India, they'll always be. But a country to country relation is another level, another thing. And with Bangladesh, we have so many different agreements already in place. We are already doing so many things in Bangladesh. And therefore, India has again pledged that they are going to invest X amount of money for Bangladesh in this particular financial year so that it is able to fulfill its obligations. Well, that's the idea. कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी अभी बताया नहीं, अभी बताएंगे. हाँ 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 तो रिलीजियस प्रैक्टिस पे ही तो लोग कोर्ट गए थे ना, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं हो सकता ये रिलीजियस प्रैक्टिस. कोर्ट ने इसके बड़े सारे रीजंस दिए, समझाया कोर्ट ने कि दिस इज नॉट योर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. ठीक है, एंड योर रिलीजियस प्रैक्टिस कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. खत्म हो गई बहस. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा था. उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में जो डीटी का कॉन्सेप्ट है, तो हिंदुइज्म जब अस्तित्व में आया तो सारी डीटीज फेमिनिन थी. हिंदू में जो ट्रेडिशन है हिंदुइज्म में वो मात्र ट्रेडिशन है, जो मेल डीटीज हैं वो बाद में है. हिंदुइज्म बिगिंस इमर्जेस विथ फेमिनिटी. जो डिविनिटी था वो फेमिनिन में था. फेमिनिन एनर्जी वाज कंसिडर्ड एज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन. जैसे शक्ति और ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी भी आप देखें तो लक्ष्मी, विद्या, धन, विद्या, शक्ति, तीनों फेमिनिन डीटीज के. तो दैट हैज बीन द कॉन्सेप्ट. अर्ली हिंदुइज्म का फेज है. एक जज ने ये अपने जजमेंट में लिखा. तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में तो ये प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता एज पार्ट ऑफ द एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म, बिकॉज even if you look at, although origin of Hinduism is very hard to trace, but they said that in the very earlier Hinduism, whatever trace we know, so Hinduism mein there has been female deities and male deities have entered later. So the deity in question was also a male deity, and therefore that in the worship, right to worship, what you say, so they also have a right to worship. So you are violating equality. You're not allowing women to exercise their right to practice their religion. And therefore, they said that women will be allowed entry. तो ये बड़ा पेचीदा केस है, और इस केस के बाद भी दोनों ही पक्ष संतुष्ट नहीं है इस जजमेंट से, और रिव्यू पे है ये पिटिशन. एंड नाउ दे आर एक्चुअली लुकिंग एट the overall this whole framework where there are so many places of worship where women are not allowed entry. So they are looking at all these questions now. So they want to come up with a comprehensive judgment on this particular issue, that what can be allowed and what cannot be allowed. So there are so many religions where women are not allowed entry into religious places, as a rule. So can this be allowed? So all of these petitions are now clubbed where this judgment is also being reviewed together with the other issues. Responsible government refers to the idea that the people / electors have a right
have a right to demand, accountability from the government. Example, in India, the Parliament exercise control over the executive through devices, devices / mechanism ज़्यादा easy word रहेगा आपके लिए, mechanism like question hour, प्रश्नकाल जिसको कहते हैं, question hour, 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 question hour, comma, no confidence motion, etc. ठीक, फिर मैंने ये कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को आप तभी चला सकते हैं व्हेन देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. सो वी कैन जस्ट राइट दिस वर्ड हियर, इंडिपेंडेंट judiciary. And what do you mean by this word? It's very simple. When you say independent judiciary, as per the constitution, I have said that there has to be rule of law. But who will uphold the rule of law? The judiciary. So when we say judiciary has to uphold the rule of law, now there is another question that we ask. Can the judiciary uphold the rule of the law if it is not independent? This is why it is so important that the judiciary said that your NJAC is null and void, because it compromises with the independence of judiciary. And if something compromises with independence of judiciary, then judiciary very well knows that it will not be able to ensure the the protection of rule of law. Nowadays, there are so many people who makes this argument, and they say that when judges retire, they take post-retirement jobs. For example, somebody becomes a chairman of National Human Rights Commission. Somebody becomes a governor of a state. There have been instances when people have become ministers or they have become parliamentarians also. There have been instances. Now, why do people raise these questions? Why do critics raise these questions? There are so many tribunals. Now, you know that in tribunals only retired judges could become a member. तो किसी न किसी को तो जाना है. लोग कहते हैं कि जिसको मिला है उस व्यक्ति के हमें चरित्र पर शक है, क्योंकि सरकार ने उसको ये रिटायरमेंट के बाद ये स्थान दिया है. This is also not fair because somebody has to go there. So what will happen? Many people who are very competent and they want an unblemished life, they will decline. Even if the government wants to send them, they'll say नहीं, बहुत controversy हो जाएगी. लोग कहेंगे हमने डिसीजन आपके फेवर में इसलिए दिया था क्योंकि हमें आपने ये रिटायरमेंट का है ना लोभ दिया. लेकिन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस आप अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के स्कीम में देखो, ये तो हम पॉलिटिकल डिबेट में कहते हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज ऐसे हो सकती है वेयर somebody and his integrity, you could actually show him that in the post retirement time you are going to get benefit, will be helping you, so that somebody may agree to compromise with their integrity or dignity. But that's a very subjective assessment. You have to realize that have the constitution made the judiciary independent? That's a fundamental thing. Because if judiciary is not independent, when judiciary is sitting on the bench and when it is proclaiming a judgment, then judiciary has to be completely free from any kind of influence, interference. Because if judiciary is not free, then judiciary will not be able to uphold the rule of the law. Then
Judiciary will act as per the dictates of the master, the executives. And if that happens, again, you are not a democracy. Then you will compromise with the very general idea or function of a democracy. In those societies, you will have judiciary, but judiciary will be a puppet in the hands of the high and mighty people. So in those countries, justice will not be served. People won't get justice. That's why if really you want to uphold the rule of the law, then you have to ensure that there has to be an independent judiciary. And in our country, if you see, you will find that the Supreme Court has been very, very active in that area. That is why the 99th Constitutional Amendment Act 2014, which said that the appointment of the higher judiciary will now be done by a body, constitutional body called National Judicial Appointment Commission. The judiciary struck it down, saying that it violates with basic structure of the constitution, which is independence of judiciary. So that is the level of independence judiciary requires. और हमारे देश संविधान ने जुडिशरी को इतनी ताकत दी है, तभी तो जुडिशरी अपने इंडिपेंडेंट को मेंटेन कर पाए, क्योंकि इंडिपेंडेंस पर हो सकता है कि हमेशा कोशिश हो कि उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उनकी इंडिपेंडेंस को कमजोर कर दें. पार्लियामेंट भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव भी ये काम कर सकता है. पार्लियामेंट में ही एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव जैसा लॉ चाहे वो बना सकता है if they have majority in the parliament. So this is the power that the judiciary has interpreted through basic structure doctrine. And basic structure doctrine has come to the rescue of the judiciary also, where judiciary has now used the basic structure doctrine and declared 99 CAA null and void because judiciary said it violates the independence of judiciary. So judiciary independence is paramount. No independent judiciary, you can't have democracy. So separation of power होता इसलिए है ताकि separate independent autonomous institutions बन सके. पिछले पॉइंट में लिखवाया था ना मैंने, that all these institutions are independent and autonomous within their domain. So when judiciary is independent and autonomous in their respective domain, and that is why judiciary is able to provide us the rule of law. देश में सुनते हैं ना, सरकार के बहुत सारे लोग पहुंचते हैं वहां पर, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, जजेस कितना तेज डांटते हैं उनको हाई कोर्ट में. कितने बड़े ऑफिसर्स हैं, सीधा डीजीपी को कॉल कर लेते हैं, तो डीजीपी की पेशी होगी, एसपी को बुला लेते हैं, एसपी की पेशी होगी. एंड देन जुडिशरी लुक्स एट द मैटर एंड देन दे गो हैमर एंड टोंग्स. बट व्हाई? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट. उनको डर नहीं है, बिकॉज दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जीक्यूटिव उनका अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, प्रपोजल भेज सकता है ना कि इनका ट्रांसफर कर दो, लेकिन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा वो तो जुडिशरी तय करेगी. तो ये जुडिशरी को लगता है दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्निंग द नेशन. दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल. और खास तौर पे अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आप याद करो, मैंने वहां कहा वहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है ना, क्योंकि वहां पर जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकता. ठीक है, हाँ लिखिए. इट रेफर्स टू द जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी में लिखता है, इट रेफर्स टू द जुडिशरी एज द अपहोल्डर ऑफ the rule of law in India. Full stop. The doctrine of basic structure which limits the amending powers of the parliament, was the best exhibition of
was the best exhibition of constitutionalism, was the best exhibition of constitutionalism, ensuring rule of law. The Supreme Court, while striking down 99 CA 2014 in Supreme Court Advocates on Record versus Union of India 2015, the Supreme Court, while striking down 99 CA 2014 in Supreme Court Advocates on Record versus Union of India, केस का नाम है, 2015, declared independence of judiciary, as the basic structure of the Constitution. एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर में ये भी समझ में आए कि बेसिक स्ट्रक्चर डज नॉट ओनली इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट ऑल्सो इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, बिकॉज इट इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. हाँ, मतलब समझा नहीं. हाँ, कर सकती है, लेकिन यही होगा. जुडिशरी अपने आप रिवैल्यूएशन नहीं करती, किसी को जाना पड़ता है. यहां ये लोग गए, ठीक, तो जुडिशरी ने उसको रिव्यू किया, उसको रिवैल्यूएशन नहीं कहते, रिव्यू कहते हैं, समीक्षा. रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि इट इज अ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि अमेंडमेंट था. अमेंडमेंट को जुडिशरी किस कसौटी से तय करती है? बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी से. ठीक है, अगर कोई नॉर्मल लॉ है तो उसमें यह देखा जाता है इज इट वायलेटिव ऑफ 13 क्लॉज 2, फंडामेंटल राइट का क्लॉज है, वो पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट में समझ में आएगा. लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा है तो जुडिशरी इस बात को चेक करती है कि डज इट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इफ इट वायलेट्स देन दे डिक्लेयर इवन द अमेंडमेंट एज नल एंड वॉइड. जो हमने ड्यू प्रोसेस से किया हो फिर भी जुडिशरी के लिए वो नल एंड वॉइड है, तो नल एंड वॉइड हो गया. ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ है तो जुडिशरी ये देखता है कि डज इट वायलेट फंडामेंटल राइट. तो फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है 13 क्लॉज 2 दैट सेज दैट देयर कैन बी नो लॉ व्हिच कैन बी मेड बाय द लेजिस्लेचर व्हिच वायलेट्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट. सो इफ एनी लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, makes any law with simple majority, which means law under ordinary capacity. Amendment is a special law. It is Constitutional Amendment Act. यहां देखो हमने CAA लिखा है इसलिए, लेकिन ऑर्डिनरी लॉ में हम केवल लिखते हैं एक्ट, बिकॉज इट इज नॉट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स एन ऑर्डिनरी लॉ. यानी वो संविधान में कुछ नहीं कर रहा, वो एक कानून में कुछ कर रहा है. तो कानून को जब चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट लुक्स एट इज इट वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट. इफ इट इज वायलेटिव इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड because it is written in the constitution. ठीक है, अब लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. बस एक शब्द याद रखना है इसके लिए, कीवर्ड. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है इट इज अबाउट द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान का सबसे कोर प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है? दैट्स इट. जो जुडिशरी के हिसाब से संविधान का सबसे मूलभूत सिद्धांत है
core principle है, that is the morality of the constitution. So constitutional morality would simply mean that you have to adhere matlab you have to stand upon, you have to follow what the core principle of the constitution. I told you that sometimes there can be majoritarian morality, sometimes there can be minoritarian morality also in any country. Now when this question is before the court, then the Supreme Court or any court in any liberal world, what they say, they would say that we have to be showing our adherence to the core principle of the constitution. Because if you're not adhering to the core provisions and principles of the constitution, then you can't create an inclusive or a democratic society. तो इंक्लूसिव समाज बनाना है, आप एक्सक्लूसिविटी से इंक्लूसिव समाज नहीं बना सकते. आपने कहा कि एक व्यक्ति जा सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है, बेस्ड ऑन आइडेंटिटी. Will it create inclusiveness? No. So what is the outcome of morality when we start talking about constitutional morality? Constitutional morality is basically saying that the Indian state has to show a commitment towards inclusiveness, towards the democratic principles, so that when you practice constitutional morality, it will lead to the emergence of a more inclusive society. It leads to the emergence of a more democratic society. Democracy means what? You are treating everybody equally. You are not making a distinction between one or the other person. So that is what constitutional morality would mean. That is, you have to adhere to the core principles of the constitutions, whatever it is, so that where you are able to find inclusivity. ऐसा भी नहीं कि individual interest has to be satisfied only. ऐसा भी नहीं that collective interest has to be satisfied. You have to find a common ground between the individual interest and the collective interest. But that common ground has to satisfy the principles of the constitutions, the core ideas of the constitution. That common ground, when you are trying to find that what has to be, proclaimed in the judgment, how you have to make a law or create an order or a rule, then it is said that every institution has to adhere to the core principle, not adhere to an individual idea or even a group idea, a collective idea. So you have to create a democratic order, an inclusive society, and you can only do that when we adhere to the principles of the constitution, not the principles, the subjective principles that may exist within a society, within a community, within a majority, minority, within gender or within any specific sort of class distinction. इसलिए इस बात के बारे में जो जब सबरीमला में केस हुआ, उस केस का वैसे नाम है यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये केस का ऐसे नाम है एंड द जजमेंट केम इन 2019. तो वहां पर एक बार फिर से, हालांकि ये तो बहुत पुराना आइडिया है, जब से संविधान बना देन दैट्स द आइडिया दैट वी हैव. Even Ambedkar ji has talked about constitutional morality in the Constituent Assembly debates. But I think people started talking more about the idea of constitutional morality, especially after the Sabrimala judgment. So famous नाम जो है वो सबरीमला केस है, वैसे टेक्निकल नाम है यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, इसको लिखिए. इसलिए जितने भी केस, अगर मैं आज के समय में बात करूं, नवतेज जौहर का मैंने एग्जांपल कल दिया था शायद एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बात की थी इसकी, है ना. नवतेज जौहर इज अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, जोसेफ साइन इज अबाउट एडल्ट्री. Why would Supreme Court decriminalize laws that said homosexuality is a crime? Why would Supreme Court decriminalize laws that said that adultery is a crime based on constitutional morality? Because the Supreme Court did not want to compromise with the idea of morality, because majority would say no, homosexuality तो पाप है, बहुत खराब, ऐसे लोग बड़े गंदे होते हैं. But this is majority's understanding. I mean, Supreme Court cannot take a decision on what is believed by a community or by a majority. So that's what it is. Similarly, adultery, why should it be a crime? Court asked this simple question. Because adultery also made a distinction between man and woman, plus it
treated women as a property of the husband. He said 21st century mein, how do you say that woman is a husband's property? So, I mean, you are completely taking away the dignity of the individual here, the autonomy of the individual here. So, Supreme Court actually operated on constitutional morality, even in these judgments, which we say that these are judgments largely emerging out of privacy question, but these are also judgments that emerges out of the question of morality of the Constitution. You know, that's why it is very, very significant. Okay. लिखिए, it stands for, इसमें सीधा सवाल पूछा था एग्जाम में, it stands for adherence to adherence नहीं लिखा, it stands for adherence to the core principles of the Constitution आमतौर पे लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो, दैट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अडेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल. प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं, सो इट इज नॉट मियरली literally following the provisions. It is following the provisions to create a more democratic and inclusive society. So that you are following and adhering to the core principle that will create a more integrated, inclusive and democratic society. Full stop. It does not mean following the constitutional provision. It does not mean following the constitutional provision in a literal sense only, but it includes a commitment to an inclusive and democratic political process in which the collective interest of society and individual are satisfied. इस केस का नाम लिख लें हम लोग, यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019. इन इस केस का नाम को लिखिए, इन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019. इसका पॉपुलर नाम क्या है? सबरीमला केस. The Supreme Court applied the doctrine of constitutional morality which excludes
social morality, which excludes social morality and alliance, ALLIANC वाला alliance नहीं, ALIGNS alliance। मतलब कभी कभी इतना सुनते आ रहे हैं ना, ये अलायंस वो अलायंस की, तो अगर पॉलिटी की क्लास है तो यहाँ पर दल वाला अलायंस की बात हो रही है। अलायंस एंड अलायंस morality, so morality has to be aligned with what? Constitution. Aligned morality with constitution, with constitution, full stop. It embraces, embrace मतलब गले लगाना, है ना? It embraces तो मतलब लिटरली गले नहीं लगा रहा है, it embraces justice, liberty, equality and fraternity, which the constitution कहाँ प्रोक्लेम करता है ये सारे आइडियाज? which the constitution proclaims in its preamble. लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसमें और भी कुछ वैल्यूज ऐड किए, वो भी लिखे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वैल्यूज लाइक फ्रीडम, equality, fairness, democracy, full stop. Next point. In recent years, अगर आपसे सवाल ये कहता है कि you have to substantiate your argument with suitable examples, that's the example. रिसेंट ईयर में इसको हम कैसे देख सकते हैं? हालांकि ये सारे जजमेंट हमें फंडामेंटल राइट पोर्शंस में पढ़ने हैं, अभी नहीं पढ़ने, इसलिए मैंने केवल अभी जिक्र किया, मैंने इस पर कोई चर्चा जजमेंट की नहीं की। इन रिसेंट ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज बिकम वेरी सिग्निफिकेंट। इन रिसेंट ईयर्स constitutional morality has become very significant because in all the revolutionary judgment, judgment like नबतेज जौहर केस, अभी मैं शॉर्ट में केस का नाम लिखा रहा हूं, नबतेज जौहर केस और जोसेफ शाइन केस, ये दो एग्जाम्पल हमारे लिए काफी। जोसेफ शाइन केस, नबतेज जौहर किस लिए था? इट वॉज अबाउट homosexuality and this was about adultery. Joseph Sain case had constitutional morality as one of their crucial fundamentals.
In the Sabrimala case, the Supreme Court upheld the supremacy of constitutional morality, over practice of religion. यही सवाल आप पूछ रहे थे ना, over practice of religion. बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जब इस जजमेंट को देखा तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है आज के समय, यू कैन हेल इट एज द सेकेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिक स्ट्रक्चर है केशवानंद भारती. अब लोग कहने लगे, एक्सपर्ट्स, जुडिशरी ने नहीं कहा, ये experts are calling it, they are saying that the manner in which the courts are now giving prominence to constitutional morality, that we should hail constitutional morality as second basic structure of the constitution. ठीक है, ये भी लिख लें आप. next point में लिखिए. next point, the constitutional morality is also equated with the constitutional morality is also equated with the और इसको अंडरलाइन भी कर देना है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, the second basic structure doctrine. second basic structure doctrine. Next point, the ideas like basic structure and constitutional morality have also evolved from judicial decisions. यानी ये सब चीजें इवॉल्व हुई हैं, आगे बढ़ी हैं और है ना, प्रगतिशील बनी हैं. कैसे? जुडिशरी के निर्णय से, फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस. द बेसिक स्ट्रक्चर stops the legislature from destroying the structural identity of the constitution. ये तो आप समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है. Stops the legislature from destroying the structural identity of the constitution through article 368. यही मैंने समझाया था कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी इस कमरे की क्या है. अगर ये संविधान है तो इन पिलर पे खड़ा है ये कमरा, तो आप बाकी चीजें अमेंड कर सकते हैं 368 के हिसाब से. लेकिन कोर्ट ने कहा कि 368 की इंटरप्रिटेशन में हम आपको जो स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी जिससे इस पूरे मकान की है, तो जो स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी संविधान की है, हम उनको वायलेट नहीं करने देंगे. दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अस, है ना. सो प्रिवेंट द स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 368. फुल स्टॉप. ऑन द अदर हैंड, what does constitutional morality do? So what is that? What can you say? On the other hand, the constitutional morality protects and preserves the values and ethos of the Constitution.
protects and preserves the values and ethos, ETHOS, ethos of the Constitution, है ना, यानी संविधान के संस्कार, संविधान की वैल्यूज, मूल्य सबको प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। एक और विषय यहां पर हमारा है, अगर मैं आपसे ये कहूं दैट यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड constitutionalism. So now I think you are in a position to answer these questions. Okay, so what can you tell me? What is the basic difference between the two words, constitution and constitutionalism? So let me put this like this. So if I ask you what is constitution, what will you tell me? Legally codified document. That may be like the best way to put it forward. Very good. What will be constitutionalism then? Yeah. So suppose you have a constitution and you are talking about a constitution and you have a legally codified document. उसमें सारे कानून, laws सब लिखे हुए हैं. So is it enough that you will have constitutionalism? So what has to be there? Huh? Both goes in hand. Why? Why no? Which means that even if you have a legal document, you need a legal foundation to preserve that legal document. है ना? Otherwise, that legal document could also be destroyed. So why did I say that? Keshavanand Bharati is a classic case of ensuring constitutionalism in India, because it is the legal foundation that we have which was crucial in protecting the constitution, so that even if there is a power to amend the constitution, which the constitution itself writes in 368, so you can very well argue कि संविधान ने तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान ने नहीं लिखा है, लेकिन संविधान को अगर हम छोड़ दें, 368 का आप प्रत्याशित इस्तेमाल करने को छोड़ दें, तो इसका आउटकम क्या होगा? Will be able to preserve constitutionalism, which means you will amend everything and anything. Suppose you have good numbers of people, 2/3 तो चाहिए ना, both house 2/3 present plus voting, that's what you require. You can change the constitution. Indra ji had it, 42nd amendment, सबको याद है. He changed hundreds of provisions of the constitution. So somebody else will come, they'll change hundreds of provisions. हालांकि इंदिरा जी did this after Keshavanand Bharati. That's also interesting, because Indra ji was very furious with Keshavanand Bharati judgment. So she wanted to teach judiciary a lesson. She was not somebody who would take this lightly. तो पहला काम तो उन्होंने क्या किया, उस दिन चीफ जस्टिस का आखिरी दिन था, तो न्यू चीफ जस्टिस बनना था, तो पहले उन्होंने कहा कि एक लाइन से देखो, सबसे पहले केशवानंद भारती के विरोध में कौन सा सीनियर मोस्ट जज है, तो वो सबसे बड़ी बेंच थी, 13 जज बैठे थे उसमें, 7-6 से वर्डिक्ट था, तो उन्होंने कहा जो सबसे टॉप मोस्ट जज है ना, उन्होंने तो केशवानंद भारती के पक्ष में निर्णय दिया है ना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में निर्णय दिया. उन्होंने कहा ये चीफ जस्टिस नहीं बन सकते. उन्होंने कहा नेक्स्ट कौन है, उन्होंने कहा नेक्स्ट में भी वही किया है. थर्ड कौन है, थर्ड ने भी वही किया. और फोर्थ कह रहे चौथे नंबर पे जो सीनियरिटी में, उन्होंने कहा कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए टू अमेंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आदमी ठीक है. तो इसलिए 3 जजेस को बाईपास करके हमारे देश में एक चीफ जस्टिस बने, है ना. सो दैट वाज द टाइम व्हेन दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट वी विटनेस्ड. फिर एक बार फिर समस्या आई जब HR खन्ना साहब को बाईपास कर दिया, है ना, और बेग साहब को बना दिया उन्होंने चीफ जस्टिस. क्यों बनाया? क्योंकि जो एक केस आया इमरजेंसी के दरमियान, विच इज कॉल्ड एज द हैबियस कॉर्पस केस, है ना, EDM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. हंसराज खन्ना साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए, even during emergency, people right to life, they have the right to come and approach the Supreme Court so that court can prevent and protect their right to life. Article 21.
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि नो, पर्सनल लिबर्टी कैन बी वायलेटेड बाय अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये सब हमें फंडामेंटल राइट्स के डिस्कशन में पढ़ना है, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको तो थोड़ा सा ध्यान रहे। देखो, ये जो हमारी पार्लियामेंट जब इस तरह से अनब्राइडल्ड वे में काम करती है ना, तब हमें समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी जरूरत है। वरना क्या होगा, जुडिशरी को तो फिर आप क्या बना देंगे, यू मेक जुडिशरी अ पंचिंग बैग, जो पसंद आया उसको बनाया, ठीक है, वो जज रहेगा। तो कोई 10वें नंबर पे है किसी को, उसको बना दोगे? बिकॉज व्हाट अबाउट द डिसिप्लिन इन द जुडिशियल रैंक्स? Because seniority matters. Because none of these people remained judges once a junior judge was made a chief justice. All of them resigned. So when Beg Saab was made chief justice, Hansraj Khanna also resigned. इसलिए 1992 में जब सेकंड जजेस केस हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कह दिया कि आज के बाद इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा। पूरा मसला ही खत्म कर दिया। तो आज आपके पास अगले 10 जज कौन बनेंगे, ये आप आज बता सकते हैं। कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स द लॉ ऑफ द लैंड, जुडिशियल डिसीजन में आएगी। इसलिए हंसराज खन्ना साहब नहीं बने, पर उनके बेटे संजीव खन्ना, ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द ओवरऑल अरेंजमेंट। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर होता है, बिकॉज व्हेन यू हैव पावर यू कैन वेरी वेल मिसयूज इट एंड डिफाई द लॉजिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनफ, देयर हैज टू बी दैट एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दैट इज इंटैक्ट। हमारे देश में आप कहां देखते हैं प्रोविजन टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 which says any law cannot violate fundamental right. Power of judicial review comes from it. It is a typical example of ensuring constitutionalism कि अगर violate हुआ है तो we are going to review it and do it right. When you look at article 14, that is equality before law, equal protection of law, that is a typical example of constitutionalism. You are ensuring constitutionalism in the country through these particular rights. Right to constitutional remedies, यानी आपकी fundamental right अगर violate होती है, then you can approach the Supreme Court of India directly under Article 32 of the Constitution. This is what ensures constitutionalism in our country. So we have these kind of classic examples. Article 50 में पहले ही कह चुका हूं. That also is a classic example of separation of power, but it also ensures constitutionalism. You know, that's precisely the ideas that we have to look at. So लिख लें. Constitution is a legally codified document. लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं रहेगा तो कोई इसको इन्फोर्स कर पाएगा या बिना इन्फोर्समेंट के रह जाएगा? यही इंपॉर्टेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। इज अ लीगली कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, बट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म it will only remain a document. It will only remain a document lacking enforcement. Next point. A constitution would constantly evolve. A constitution would constantly evolve through amendments. तो हमने भी इतने अमेंडमेंट्स किए तो उससे हमारा संविधान इवॉल्व भी हुआ है. That's what we know through amendments. लेकिन कोई भी अमेंडमेंट ऐसा हो जो इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट करता हो, उसको सेफगार्ड ना करता हो, है ना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करता हो, उसको सेफगार्ड ना करता हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तभी तो हम उसको नल एंड वॉइड कहेंगे, है ना. तो इट मीन्स दैट एनीथिंग दैट वी चेंज हैज टू बी प्रोग्रेसिव, has to be inclusive, has to be based on the core ideas of principles of the constitution, has to observe the principles of the constitution. That is what constitutionalism does. So yes, constitutionalism खाली हो लेकिन अगर संविधान के बिना हो तो भी खोखला है, because
कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी लीगल फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है. द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ओज द लीगल फाउंडेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल. तो संविधानवाद केवल आइडिया अगर हो बिना संविधान के, तो क्या होगा? संविधानवाद हो सकता है बिना संविधान के? नहीं हो सकता. तो इसलिए संविधान गिव्स अ लीगल फाउंडेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. लेकिन केवल संविधान हो बिना संविधानवाद के तो भी क्या होगा? देन you will not be able to ensure the democratic principles in the nation, which means that there will be a document, but that document will not be legally enforced in the society. Constitutionalism. That is why judiciary plays such an important role in ensuring that constitutionalism is practiced. And without constitution, there is nothing called constitutionalism. Then it is something which is only a word, because first there has to be a constitution for sure. Then we can talk about whether there is constitutionalism or not. So some constitution can be there without its legal enforceability, which means there is no constitutionalism. Okay? But if there is no constitution, there is no constitutionalism. Then it is just nothing in place. Okay? Would evolve through times, but through amendments, but constitutionalism would ensure, that such changes are consistent with the principles of limited government, as well as safeguarding of the individual rights. फिर लिखिए, प्रोविजन टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो व्हाट आर द प्रोविजंस? शॉर्ट में मैंने बस बताया, फिर ये आर्टिकल्स हमें जब पढ़ना है तो फिर हम बात करेंगे. जैसे एक प्रोविजन है 13(2). द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. एनी लॉ कैन नॉट वायलेट any provision that is written in fundamental rights of the constitution. ठीक है. The other is, as I said, article 14. ये सब आर्टिकल लिख रहा हूं. Article 14 talks about equality before law and equal protection of law. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं that we can set through in our constitution. What will also ensure constitutionalism? We have, देखो सब enforcement के लिए है ना. Article 13(2) is enforcing. Judicial review होगा तो enforcement है that any law cannot violate fundamental right. 14, everybody is equal before law and all the laws has to protect everyone. Equal protection of law, again enforcement. Then we say article 32, right to constitutional remedies. This is also enforcement of fundamental right. Right to constitutional remedies. So these are primary areas through which we understand how to ensure the constitutionalism in our country. है ना? यहाँ तक कि basic structure doctrine can be cited as an example. Basic structure doctrine to ensure constitutionalism. ठीक है? So tomorrow we'll try to understand how many different types of majorities are required to pass a law in our country. तो ये जो बार बार लॉ का क्वेश्चन आता है तो हमें मेजॉरिटी का पता नहीं है, तो वी शुड बी वेरी क्लियर विद इट ऑल्सो. तो कल इसी से क्लास शुरू करेंगे. ठीक है? मेजॉरिटीज, डिफरेंट मेजॉरिटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.